Hello everyone. गुड इवनिंग मैम। Okay, रुक जाओ. Hmm. Kiran, you are the host now. Hello, Susmita. Actually, make me co-host, please. Okay. मैंने आपको host बना दिया already. नहीं, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ ताकि कभी अगर इंटरनेट का इशू आता है तो सेशन को एंड ना हो। ठीक है, तो मैं आपको होस्ट बनाता हूँ ताकि हम्म आपके पास सब एक्सेस आते हैं। ओके, हम्म. प्लीज मेक मी को-होस्ट। हम्म. यस, थैंक यू। या यू कैन कंटिन्यू द सेशन। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग फंक्शन? कल जो फंक्शंस हमने सीखा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? Can you see my screen? नो मैम। Now, यस मैम। so yesterday we learned a lot of things. We learned about least comprehension. We learned about modules. We learned about um, functions. We learned about how to handle files. Right? Now coming to functions, I showed you one example. We'll show you a few more. But apart from that, for that one example, do you have any query, any question, any confusion, anything? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया ना? That's why you don't have any question. Okay, task किसने किया? Anyone completed the task? You need to extract the second letter from each of the word in a sentence with the help of a function. Anyone did that? Okay, before starting मैं एक बात बोल दूं. Today will end by 9. Okay, ये जो आधा घंटे का आधा घंटे का जो रह गया, we'll take that in the next session. Is that fine? ओके मैम। Okay. Okay, चलो. Today we'll learn one new concept called OOPS. Okay, now what is this? Anyone? What is the full form of OOPS? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Object प्रोग्रामिंग। oriented programming. Okay. So in this OOPS, we have two main concepts. One is class, another one is object. Okay. Now, just because it's a completely new concept to you, so I need to explain few things first, and then we'll jump into that topic and we'll show how to create the code. We'll come to that later. So before starting, we need to understand what is OOPS. What is this object? What is this class? So let's take an example of a house. Okay. Now you have a blueprint of a house, like how the house will look like, the structure, how it will look like. You have a blueprint of that. So you imagine you are going to build a house and you have created a blueprint of it. Okay. Now in that case, when creating the blueprint or when uh,
when you are designing that blueprint, that building does not exist in real life, right? That is there in your brain, that is there in the paper. So that house doesn't exist. Now, from that blueprint, when you are building one house, okay, that is called object. And the blueprint, that is called the class. Okay. So when you have something which is there in your brain, which doesn't exist in real time, and just you have a blueprint of it, like how the house will look like, that is the class. Okay, so the blueprint is the class. Now, from that blueprint, when I'm building one house, now with that same blueprint, Kiran can build one house, and with that same blueprint, Pratik can build another one house. With that same blueprint, Rahul can create another one house, right? So with one class, we can create multiple objects. Are you getting the point? So you have one blueprint of a house, that is your class. Now that doesn't exist in real time because that is just a blueprint. You have just created one blueprint where you have added all the features of the house which you want to be there in that house, to present in that house. You have created a blueprint with the help of your thoughts, right? Now if I'm checking your blueprint, I can understand that, okay, so if this is the blueprint, I know how your house will look like. Okay, now with the same blueprint we can create multiple houses. Similarly, with one class we can create multiple objects. Now I'm giving you another one example. Let's say uh, uh, another one example. Let's say I have um I have one model of a human being. Okay. Now, from that human being, we have created 3, 4 humans. Okay. They looks different. Okay. Now, if you check your class, you can get an idea how your objects will look like. Okay. Similarly, we all know about creating demo vehicles. Demo, let's say your cars, like before launching any brand new car, the company create a demo, right? So that demo, before creation, when we are drawing that on paper, when it's there in my brain and on the paper only, that is my class. When I create or when I build one demo, that time it's there in real life. So that is my object one. Are you getting my example? One একটু চশমাটা দাও। हिंदी में, मेरा तो हिंदी बहुत खराब है राहुल। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग, मान लो तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट है, घर का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपने ड्राइंग की है कि आपका घर देखने में कैसा होगा। ठीक है, तो आप जब ड्राइंग कर रहे हो या किसी इंजीनियर से करवा रहे हो, तो वो घर तो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? वो आपके दिमाग में है और पेपर में है से। तो वो जो ब्लूप्रिंट आपने बनवाया है, वो दैट ब्लूप्रिंट इज टेलिंग यू कि आपका घर देखने में कैसा होगा, राइट? अग्री? तो वो ब्लूप्रिंट जिसमें आपका घर ड्राइंग किया हुआ है कि आपका घर में क्या-क्या फीचर्स होगा, देखने में कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, ये सारे आपने मैप के हिसाब से वहाँ पे लिखा है एंड आप एक इमेज क्रिएट की है। तो वो मेरा क्लास है। अभी वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से अब जब एक घर बनवाओगे, मान लो मुंबई में एक जगह में आपने एक घर बनवाया, वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, जो देखने में सेम टू सेम है। फिर आप दूसरी जगह जाके और एक घर बनवाए। तो यू हैव क्रिएटेड और यू हैव बिल्डेड 2 हाउसेस वो ब्लूप्रिंट से। तो अगर मैं ब्लूप्रिंट को क्लास मान के चलूँ, तो ये जो फर्स्ट आपने घर बनवाया है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट 1।
और जो दूसरे जगह में आपने बनवाया फिर से, दैट इज योर ऑब्जेक्ट 2। अभी आप 3 4 5 6 जितने घर बनवाओ, दोज आर योर ऑब्जेक्ट 3 4 5 6। तो क्लास हमें बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट देखने में कैसा होगा, व्हाट आर द फीचर्स विल बी देयर इन माय हाउस और इन माय ऑब्जेक्ट। वो हमें क्लास देखने से पता चलता है। अभी क्लास बनाने के बाद वहां से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। गॉट इट राहुल? आई थिंक हम कोड लिखने के बाद आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा। राहुल, आपको समझ में आया? वॉइस सॉरी। हेलो। हम्म। यस मैम। ओके। नेक्स्ट। मैम आपकी हिंदी तो कितनी सही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हिंदी नहीं आता। अरे अगर कुछ उल्टा फुल्टा बोल दूं तो आप लोग हंसोगे ना, इसलिए मैं कोई नहीं। बात नहीं मैम, हम समझे। ओके, सी, दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर क्लास। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखा है फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हम अच्छे से कोड करेंगे इसको कोलैब में। बट बिफोर दैट आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट लुक्स लाइक। देखो, क्लास फर्स्ट याद है ना, हम वो फंक्शन के टाइम कैसे डेफ से क्रिएट किए थे। फंक्शन डेफ एंड देन द फंक्शन नेम, एंड विद इन पेरेंथेसिस वी मेंशन आवर आर्ग्यूमेंट और आवर इनपुट, राइट? नाउ हियर व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी क्लास एंड आपका ऑब्जेक्ट, हम क्लास से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विथ क्लास। जैसे डेफ वहां पे हमारा कीवर्ड था, यहाँ पे क्लास इज आवर कीवर्ड। जैसे when we are writing any if statement, we start with if, right? जब हम loops लिखते हैं, we start with that loop name, for or while, right? Here also when we are starting our class, we start with class, and after that we create our um, जो भी हमारा उसके अंदर जो भी रहेगा, those things we mention, will come to that later, but as of now we start with class. Now after mentioning class, we need to give a name to our class. वेन एवर यू आर क्रिएटिंग, आप जब भी कुछ क्लास क्रिएट कर रहे हो, सब क्लास का एक एक नाम हमें देना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट फंक्शन। फंक्शन में भी डेफ लिखने के बाद हमें एक फंक्शन को नाम देना पड़ता है, राइट? यहाँ पे भी क्लास के बाद हमें एक नाम देना पड़ेगा। ओके, व्हाट इट्स सेइंग अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ये तो हमें समझ में आ गया, राइट? An accumulation of functions and data members that share the same scope and gets instantiated when the object is created. I need to show you that. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आई एम टेकिंग अ फ्रेश पेज। Okay, now what I have mentioned, that we start with class, right? Now after writing class, we need to give a name to our class. Let's say I'm taking a simple name, dog. Okay, now after that we need to create functions under that. Now the question is, ये function क्या है? Functions is like this, meaning whenever you are creating any class, अब जब भी ऐसा कुछ क्लास क्रिएट कर रहे हो, you need to have
few attributes, few behavior, few functions within that. ठीक है, मान लो if I'm creating a class called dog, ठीक है, now while creating the class you need to have few attributes. Now what is the attribute of class dog? If you have a name, if your dog has a name, sorry, that comes under attribute. Okay, मान लो if human is a class, then let's say I am one object of class human, you are another one object of class human, Rahul is another one object of class human, Pratik is another one object of class human. Okay, now when I'm creating class, what is our goal? Class is nothing but a blueprint, so it will talk about the basic things we all have. Okay, think properly that अगर आपके पास एक क्लास है, क्लास का काम क्या है? It will talk about us, कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास बेसिक क्या क्या चीज है. It will talk about that, right? अभी ये क्लास ह्यूमन क्रिएट करने के बाद हम सब एक एक करके एज ऑब्जेक्ट उसके अंदर घुसेंगे धीरे धीरे करके, राइट? हमारे पास एक क्लास है विच इज टॉकिंग अबाउट अस, विच इज टॉकिंग अबाउट ऑल ह्यूमन, सो it will talk about the basic things human has. Now in that case, if I am registering myself as an object to that human class, so I need to give some basic details to that human class. तो आप जब ये क्लास क्रिएट कर रहे हो, you need to mention few attributes, you need to mention few functions. Now what is attribute? Attribute meaning you need to give a name, age, or मान लो here I'm giving, because my class name is dog, so I'm taking name of the dog, I'm taking age of the dog, let's say, or I'm taking the color of the dog. Okay, you can take all three, you can take any two, okay, whatever the requirement is. So here I'm giving 2 or 3 attributes. Now after that, what is this function then? What are the things your dog can do? Your dog can walk, your dog can bark, your dog can dance, your dog can run. Okay, all these are functions. Okay, these things my dog can perform. So these comes under the functions. So नाम, color and age, ये तो functions नहीं है, ये तो कोई activity नहीं है, right? So these comes under attributes. And whatever activity your dog can perform, those comes under your functions. So let's see, if we are considering that human class, तो मेरा नाम, color, age, फिर where I'm staying, these comes under my let's say my city, these comes under my attributes. Okay, and what are the skills I have, what are the things I can do, those comes under my function. Okay, so similarly if I go back here, we can so all of you are like, do you have your laptop with you? गाइस ट्राई करो कि लैपटॉप लेके बैठो सेशन में, ही ना ये जो 1 घंटे आप स्पेंड कर रहे हो यहाँ पे, इट विल क्लियर अ लॉट ऑफ योर डाउट. अब बैठ के ही इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एनीवेज आपके पास है ही लैपटॉप, तो ट्राई करो कि वो लेके ही बैठो. इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम योर मोबाइल, ट्राई टू ज्वाइन फ्रॉम योर लैपटॉप, या मोबाइल से ज्वाइन करके भी आप लैपटॉप सामने खुला रख सकते हो ना. Okay, now let's say class dog, and here I'm going to create one, let's say two attributes. Now while creating attributes, okay, attribute नहीं create करके, first I'm going to show you how to create one function under the class. Okay, that will be easier. तो मान लो my dog can talk, my बस my dog can talk, only talking my dog can talk. So the same way, the way we create our function, but notice one thing here, I'm creating this def under this class. Why I'm saying under?
because here you can see this indentation. This indentation talks about that this function I'm creating under this class. Okay, now def print, sorry, def, I need to give a name to my function, that is, let's say talk. Okay, now whenever we are creating this function, we always need to mention self. Why? What is this self? This self means later on, अभी जो हम class create कर रहे हैं, this class doesn't exist in real time. This I'm talking about the structure only. Okay, when we will create object, then it will consume some memory. Okay, then it will take some space. So for that, whatever object I'm going to create, that object will pass here. Self meaning, if I am considering myself, here self meaning Shuchishmita. If Rahul is my object, is second object, then Rahul is this, like, will come here. If Kalpesh is third object, then Kalpesh will come here. So self meaning whatever object I'm going to create, that object itself. Okay, so whenever we are going to create any function under any class, we have to mention this self. Okay, now if you call this function, what this function will do, why we create function? Yesterday we learned that whenever we are creating any function, we call that function so that it can do some task. Agree? Yes or no? हम function क्यों create करते हैं? ताकि हम जब इसको कॉल करें, it can do some task, it can perform some task. नहीं तो why we will call? Here also, when you are creating any function, we are creating so that it can do some task, right? So under this talk function, what task it will do? If I'm calling this function, it will do some task, that is, let's say, you can print something else. I'm printing this, you can print something else. Okay. Now, this is how we create a function. Coming to attributes, name, color, age, how to mention those things. For that, I need to show you another one slide that is called init function. Whenever we create any function, see, let's consider human being is a class. Male and female inherited from class human being. Okay, we have two. So under class, we have two more class. One is male, one is female. Okay. Okay, I think we can discuss this later. Before that, I need to show you what is init function. Okay, first you tell me class and object का जो concept है, what is class and what is object. पूरा नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया ये क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है. पूरा तो करने के बाद समझ में आया. थोड़ा बहुत आया समझ में. आप लोग चैट यूज करो अगर नहीं बोलना है तो. Yes, ma'am. वेरी गुड. ठीक है. नाउ whenever we create any class, and under that, let's say I'm creating attributes, function 1, function 2. Okay. Now after that, we create object 1, object 2. Okay. Now after creating object, you can call your functions. Okay. After creating object, you can call any of the function. Let's say function 1, if you call, it will print that woof or whatever text you want to print, it will print that. And if you are calling this function, okay, let's say this function I have mentioned print yes.
So if you are calling this function, it will print yes. Now, coming to this, these two are very disciplined, meaning if you call them, it will work. If you don't call, it will not work. Okay. But coming to this attribute, here, if I'm mentioning that function with the help of init function, init method is a magic method, meaning if you keep this init method in your class, when you are creating the object, if you don't call this, still it will call itself automatically. मीनिंग क्लास के अंदर अगर आपने इनिट को रखा, तो जब अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो अंडर दिस क्लास, ये इनिट खुद को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है. आप बुलाओ या ना बुलाओ, डजंट मैटर, इट विल कॉल इटसेल्फ ऑटोमेटिकली. बाय डिफॉल्ट इट विल कॉल इटसेल्फ. जैसे ये मुझे कॉल करना पड़ेगा फिर काम करेगा, ये मुझे कॉल करना पड़ेगा फिर काम करेगा. बट कमिंग टू इनिट, इट इज अ मैजिक मेथड, इट विल कॉल इटसेल्फ ऑटोमेटिकली. ओके. ये अगर आपने इसके अंदर जो कुछ भी है, मान लो इनिट के अंदर मेरे पास नेम, एज एंड कलर है, तो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस क्लास के अंदर, वहां पे आपको ये नेम, एज एंड कलर मेंशन करना ही पड़ेगा, एल्स इट विल नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट. तो मान लो मेरा एक बैंक है जहां पे मैंने क्लास क्रिएट की है, वहां पे नेम, अकाउंट नंबर एंड इनिशियल बैलेंस, दीज आर माय एट्रीब्यूट्स. तो अगर आप यहाँ पे आके कोई अकाउंट खोलोगे, तो आपको ये तीन चीज मेंशन करना ही पड़ेगा, एल्स यू वोंट बी एबल टू ओपन एन अकाउंट हियर. गॉट इट? यस मैम. अभी चलो देखते हैं. Now here we have created one function. Now let's create that init method. Def, how to create init? Underscore underscore init underscore underscore. Okay. Now let's go for self. I mentioned that you have to mention self every time you are creating. Now here I'm giving, let's say, name, age, and let's say color. Okay. Now self dot name equal to name. Okay. After you mention all the attributes, you have to create this so that every time we are creating one object, you have to mention separately the name of the object, age, and color. Okay. This is how we create attribute. Self dot age equal to age. Self dot color equal to color. Okay. Now let's say, along with all this, I'm creating another one function. This is my function 2, def. The function name I'm giving print all attributes, meaning this function, if you call this function, it will print all of these. Okay. Now what I need to give? Self. Now print instead of creating something randomly, let's create a meaningful sentence. Okay. You can just take self dot name comma self dot age self dot color and print. You can do that. Okay. Comma comma देके आप ये तीनों का नाम लिख सकते हो. But what I'm going to do, I'm going to create one meaningful sentence. So what I'm going to do, let's say the dog name is, I'm creating one placeholder. Okay. अभी ये placeholder में क्या डालना है, we'll tell that later. Okay. क्या डालेंगे हम ये placeholder के लिए? Self dot name. ठीक है. So the dog name is dash and the age
is dash. ओके, नाउ ये दोनों होल्डर के लिए मुझे दो चीज डालना है। फर्स्ट होल्डर के लिए सेल्फ डॉट नेम, सेकेंड होल्डर के लिए सेल्फ डॉट। ये अब अगर आपको कलर भी डालना है तो यू कैन ऐड दैट द एज इज डैश एंड द कलर इज डैश। ओके, अगर आपको डालना है तो। नेक्स्ट, हाउ टू ऐड दोस टू थिंग्स, डॉट फॉर्मेट। ओके, अभी डॉट फॉर्मेट लिखने के बाद यू कैन मेंशन दैट ये फर्स्ट होल्डर में आप क्या डालना चाहते हो, सेकंड होल्डर में आपको क्या डालना है। तो फर्स्ट होल्डर में आई वांट टू पुट self dot name. Okay, and for the next folder I want to put self dot age. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं म्यूट में थी। और मैम ये जो ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हाँ बोलो। ये जो ओप्स के कॉन्सेप्ट है वो पाइथन के टॉपिक है। हाँ, ओके। तो अभी प्ले करके देखते हैं। तो ये तुमने ब्लूप्रिंट क्रिएट कर ली है। नाउ वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, हेलो मैम। हेलो हम्म, मैम, इसमें अगर कलर ऐड करना हो तो कैसे करें? यहाँ पे आप बताओ कैसे करें। एनीवन, इफ आई वांट टू ऐड कलर इन दिस सेंटेंस, कैसे करेंगे वो। और एक होल्डर ऐड कर दो। तो द डॉग नेम इज डैश, द एज इज डैश एंड द कलर इज डैश। वो डैश के लिए आई नीड टू ऐड अनदर वन, सेल्फ डॉट कलर। ओके, अभी आप एक काम करो, यू स्कीप दिस, यू क्रिएट वन क्लास विथ इन इट एंड वन फंक्शन। कोई भी फंक्शन ले सकते हो आप, डॉग की जगह कुछ और भी डाल सकते हो। क्रिएट वन, आप एक क्रिएट करो।
Done. Okay. Now let's see how we can create object. Screen is visible, right? Yes, ma'am. Now let's create object. Okay. Now let's say I'm giving a name to my object, that is dog1. Okay. Now how we will make sure that ये जो object हम create कर रहे हैं, that is under this class. How to mention that? You need to give the name of your class. Okay. Now parenthesis. Now see here what I have mentioned, that if you create any init method, the attributes you have under that, you have to mention those things while creating the object. जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन ऑल दोस एट्रीब्यूट नेम्स जो तुम्हारा इनिट के अंदर है. तो अगर हम ये मेंशन ना करके ये प्ले करने की ट्राई करें तो क्या होगा देखते हैं. इट्स गिविंग अस एरर. व्हाट इट्स सेइंग, dog dot init missing three required positional argument, one is name, one is age, one is color is missing. तो ये आपको देना था, आपने नहीं दिया, so that's why it's giving us error. Okay, so what are the things we need to give? One is, let's say, Toffee. Okay, the name is Toffee, let's say. And the next thing is age, which is, let's say, 3 years. And color is black. Okay, now try to play. Okay, see, now it's working. Okay, ये हमारा object create हो गया. Now what next we need to do? Now you can call any of your function. You can call talk function, you can call print all attribute function. So let's say I'm calling talk function first. How to do that? What is your object name? Dog1 dot dog, and your attribute name is talk. Okay, parenthesis. Now this parenthesis is important. ये अगर आप नहीं दोगे तो ये play नहीं होगा. Okay, we are getting output. Next play करके देखते हैं. dog1 print all attribute. See, the dog name is Toffee and the age is 3 and the color is black. मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए. कौन सा? ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन. यस मैम. तो
तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, when I'm creating the object, by default this init method will call itself, और for these functions और जो others function है, इन लोगों को अगर आप कॉल करोगे तभी ये काम करेगा, अगर आपने नहीं कॉल किया तो ये नहीं काम करेगा। तो while I'm creating the object, I try to play without all these informations. तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन के अलावा ये प्ले करें तो इट्स गिविंग अस एरर, राइट, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो भी इंफॉर्मेशन इन लोगों को चाहिए था हमने वो डाल दिया। टॉफी नेम दे दिया, एज 3 इयर्स दे दिया, कलर ब्लैक दे दिया, एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू प्ले। फिर जब मैंने प्ले किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है dog1। वो क्रिएट करने के बाद आई ट्राई टू कॉल दिस फंक्शन विच इज टॉप फंक्शन। ये फंक्शन का नेम है टॉप। So I tried to play this, it's working. I tried to play this again, ये भी मैंने कॉल किया dog1 लिख के, फिर ये भी कॉल किया। So this is also giving us the out. Okay? मैम मेरे इसमें ये डॉग वन जो है ना प्ले नहीं हो रहा है। गलती किए होंगे कुछ, नेम डॉग इज नॉट डिफाइंड मैम, ऐसा कह रहे हैं। दिखाओ क्या किया। प्रशांत, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे गलती खुद का, लाइक हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर फॉल्ट्स, कि आप ठीक से जो मैंने लिखा है ना एकदम लाइन बाय लाइन देखो। Because मैम most सेम of the time sometimes you miss indentation, sometimes you start from like after 2-3 गैप देके आप शुरू करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए ही आपका प्ले नहीं होता है। अब दिखाओ आपका कोड। हाँ मैम। बिकॉज अभी तो एक कोड है ना, इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तब तो और भी बहुत सारा कोड होगा। तो यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स के जो डेफ आपने की है वो क्लास के अंदर है या नहीं। तो इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर्ड। हाँ मैम शेयर किया। अश्विनी, सॉरी आई मिस्ड योर टेक्स्ट। ये पाइथन के अंदर ही है। अश्विनी शिंदे, आई मिस्ड योर टेक्स्ट। आया नहीं प्रशांत। सॉरी मैम, वो किरण राठौर सर को गया। हम्म। वो किरण राठौर सर को गया। आप शेयर कर रहे हो क्या? हाँ मैम। हाँ कर दिया मैडम। ओके, आया नहीं अभी तक। अब इसके पहले का कोड दिखाओ। इसके पहले आपने क्लास डिफाइन की है ना, हाँ मैम। वो वाला कोड दिखाओ। हाँ गाइस, आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करते तो लाइक बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता। देखो प्रशांत के कितने सारे क्लियर हो रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई बोल सकता है क्या?
Can anyone find out what is the problem? ये 4 में जो है you leave that. ऊपर का देखो. Prashant, can you understand what is the problem? No, ma'am. That's why I asked you. आपके क्लास में डॉग डी कैपिटल है, यहाँ पे आपने स्मॉल डी डाला है, अच्छा ma'am. तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डॉग के बारे में बात कर रहे हो आप, क्योंकि स्मॉल डी, स्मॉल ओ, स्मॉल जी में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये मैम क्लास इसमें है ही ऐसा नहीं. कुछ नहीं रहता क्या कि हम अगर कैपिटल डाले तो वो ऑटो, क्योंकि पाइथन में तो स्मॉल यूज होता है ना, तो अभी हम हम्म. अगर हम पाइथन में तो स्मॉल केस यूज होता है ना. नहीं, पाइथन आपने सीखा था ना फर्स्ट डे में कि पाइथन केस सेंसिटिव है, इसके लिए कैपिटल डी ओ जी एंड स्मॉल डी ओ जी आर टू डिफरेंट थिंग. ओके. मैम हेलो हम्म. मैम, एरर आ रहा है हम्म. मेरे में भी मैम, एरर आ रहा है, मैं कोड कर रहा हूँ तो आपने भी किया. दिखाओ. एक सेकंड मैम, सेंड करता हूँ. ओके. whatever we have discussed, उसका एक बड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्रिएट की है. ठीक. द क्लास नेम इज बैंक अकाउंट. ओके. अंडरस्टैंड केयरफुली, ये आप एक टैब में खोल के रखना, एंड एक न्यू टैब में ये सेम चीज. डोंट थिंक कि अरे ये तो समझ में आ गया तो मुझे नहीं करना है. डोंट डू दैट. डू द सेम थिंग. पास में और एक नया टैब खोलो, एक नया नोटबुक खोलो, उसमें ये सेम चीज करो. डू इट बाय योरसेल्फ. ओके. देख देख के सेम चीज ही लिखो, बट लिखो. तो द क्लास नेम इज बैंक अकाउंट. अभी कंस्ट्रक्टर जो है इनिट मेथड, उसके अंदर हमने क्या क्या एट्रीब्यूट्स ऐड की है. एक, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, द ब्रांच नेम, एंड वन स्टैटिक, दैट इज बैलेंस विच इज 5000. अगर आपको ये बैलेंस यहाँ पे सेपरेट रखना है वो भी आप कर सकते हो. ओके. यहाँ पे सिर्फ बैलेंस लिखने से भी काम हो जाएगा. ओके. ओके. इसका क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं. ओके. मैम सॉरी, वो मैंने दूसरा भेज दिया मैम, सॉरी, अभी मैंने भेजा मैम. ये आपके पास कहाँ से आया? मैम आपने अभी जो किया ना, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे काम अच्छा अच्छा था. अच्छा. ठीक है ठीक है. भेजो. अभी भेजा मैम, अभी भेजा. वो स्क्रीनशॉट था ना फ्रंट में, तो एक चीज देखो. हाउ टू अंडरस्टैंड. देखो, ये जो डेफ है, ये जो डेफ है, ये कौन से कलर में है? ब्लू में. राइट राहुल? ये ऊपर का जो डेफ है, ये आपका कलर चेंज ही नहीं हुआ, तो श्योरली यहाँ पे ही कुछ गलती है. तो आप नीचे भी अगर चेक करोगे कि ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे भी इट शोइंग कि ये लाइन में कुछ गलती है. राइट. नाउ द क्वेश्चन इज क्या गलती है. आपने डेफ के बाद कुछ स्पेस नहीं दिया, तो इसलिए इट्स काउंटिंग डेफ इन इट एज वन वर्ड. तो डेफ इन इट बोल के तो कुछ है नहीं, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. आया समझ में? मैम डेफ के बाद एक स्पेस डालो, because def and underscore underscore init underscore underscore, these two are two different things. So def is the keyword, def init not. मैम हेलो मैम. Yes, Prashant. मैम अभी मैंने जो आपको भेजा था डॉग का, मेरा जो एरर आ रहा था, तो वो मैंने क्लियर करके उसको स्मॉल केस में कर लिया है, लेकिन अभी अगर मैं उस ब्रैकेट में कुछ डाल रहा हूँ ना, जो आपने सेम हम्म. डाला था, तो हम्म. वहाँ पे एरर आ रहा है कि डॉग ब्रैकेट्स टेक्स्ट नो आर्गुमेंट्स.
ओके, जब मैं स्क्रीनशॉट जब लो पूरा स्क्रीन का, पूरा कोड लेके स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ठीक है ये किसका था? राहुल का ना? हेलो। हाँ हाँ सेम इशू मैम, मैंने शेयर किया है आपको कोड। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, ये पहले क्लियर कर ले। तो कमिंग टू अनदर वन प्रॉब्लम, डेफ के बाद स्पेस डालो, फिर सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर लिखो। उसका प्रोडक्शन हो गया है, वो मटेरियल रिलीज करवाना है, ठीक है रिलीज प्रशांत, करने का राहुल, प्रशांत गो ऑन म्यूट। टॉक ठीक है, डेफ ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉग वन इक्वल टू डॉग, फिर ये 3, ठीक है ओके। तो आप सिर्फ डेफ के बाद में स्पेस डालो एंड सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर लिखो। ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ कमिंग टू प्रज्वल। हेलो। रुक जाओ। ओके। डॉग init self name age color self dot name self dot age self dot color def dog, okay, dog name is dash dash self name self age self color, okay fine. Now dog one equal to dog 3 black, okay. वो मैम क्लास ऑब्जेक्ट में प्रिंट डॉग। ऑल एट्रीब्यूट्स के बाद में आप एम्प्टी ब्रेसेस डालो, ओके पेरेंथेसिस डालो। Is it working now? नो मैम, क्या दिखा रहा है? डॉग टेक्स्ट नो आर्गुमेंट, डॉग parenthesis bracket text no argument. Am I missing something? ओके, गॉट इट। इनिट में 2 अंडरस्कोर होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। init के बाद तो क्या? पहले भी 2, बाद में भी 2। ओके हाँ आया मैम आया। ओके ठीक है ओके, व्हाट एल्स? क्या राहुल हेलो। बोल? हाँ यस मैम, वो मैंने उधर किया है बट वो ब्लू हो गया है, बट मैम फिर भी एरर आ रहा है। लाइन हाँ, 8 में अभी एरर आ रहा स्क्रीनशॉट है। भेजो, भेजो स्क्रीनशॉट। जी मैम ओके। यस मैम गया। हाँ रुक जाओ। राहुल, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ देखो, वहां पे लिखा ही है ना नीचे, यस मैम। जहाँ पे एरर आया है, क्या लिखा है सिंटैक्स एरर में? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कोलोन, राइट? यस यस। कहाँ पे एक्सपेक्टेड है? वो भी एरो देके लिखा हुआ है। 8th लाइन राइट। उसका लाइन देखो ऊपर में, एक्सपेक्टेड के ऊपर क्या है? डेप डेप। ओके ओके। टॉक टॉक के पहले नहीं, आएगा मैम। तो के बाद में आएगा। ओके यहाँ पे नीचे आपने दी है, सेल्फ के बाद आपने दी है, ऊपर में मिस कर गए। ओके। तो ऊपर भी मैम सेल्फ के बाद देना है या टॉक के हाँ, बाद देना सेल्फ है? के बाद ही तो देना है। ओके। हुआ? नो मैम, फिर से आ रहा है एरर। टाइप एरर डॉग टॉक क्या नो। एरर दिखा रहा है? मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। आप सिंटैक्स एरर पढ़ना सीखो। ये अगर एक्सपेक्टेड कोलन लिखा हुआ है, कहाँ पे डालना है वो भी लिखा हुआ है। यस मैम डाल दिया। अभी हुआ क्या? नहीं हुआ मैम, मैं वही स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ मैम। हाँ, वो क्या एरर दिखा रहा है वो भी शॉर्ट में लेना। यस मैम लिया।
Send you. जी मैम सेंड किया। सेंड किया मैम। Order is that. डॉग 1 में कुछ प्रॉब्लम है। ओके सॉरी। अब कोड भेजो पूरा राहुल चैट में यस मैम। कॉपी करके। कोड भेजो ना। हाँ कॉपी करके भेजो मुझे दोनों कोड, क्लास का भी और वो। ओके मैम, मुझे लेक्चर लॉग करना पड़ेगा। ओके मैम, मैं सेंड कर Now see, these are my attributes. Now here, this is my function. Okay. Now what I'm doing, if you deposit something, I will call this deposit function. Okay. Now this deposit will do what? आपका इनिशियल जो बैलेंस है उसके साथ ये जो नया अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, इट विल ऐड दैट. ओके. तो मान लो मेरा इनिशियल बैलेंस इज 5000. नाउ आई एम एडिंग 2000 एक्स्ट्रा. आई एम डिपॉजिटिंग 2000. So what I need to do? फर्स्ट इफ यू कॉल दिस इट विल आस्क यू कि कितना अमाउंट आप डालना चाहते हो. मैंने लिख दिया 2000. तो वो करने के बाद व्हाट इट विल डू, जो आपका इनिशियल अमाउंट है उसके साथ जो नया बैलेंस है, वो बैलेंस के साथ ये नया वाला जो आपका अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा. तो 5000 प्लस 2000 हो जाएगा. ओके. प्लस इक्वल टू मीनिंग ये ऐड करके दैट विल बी योर न्यू बैलेंस. ओके. एंड देन इट विल प्रिंट कि आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका अमाउंट डिपॉजिटेड 2000 है, ये आपका मैसेज आ जाएगा, ये आपका प्रिंट हो जाएगा. दिस इज फॉर डिपॉजिट पार्ट. इफ यू विड्रॉल एनी अमाउंट, मान लो आपका 5000 है बैलेंस, ठीक है. इनिशियली जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम लिख रहे हो कि कितना बैलेंस है, तब आपने 5000 लिखा था, तो आपने अकाउंट खोलने के टाइम आपका बैलेंस था 5000. नाउ यू वांट टू विड्रॉ सम अमाउंट. तो अगर मान लो तुम्हारा 5000 है, तो इफ यू वांट टू विड्रॉ 3000, तो मुझे क्या करना है एज अ बैंक, मुझे पहले देखना है कि जो अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हो उतना अमाउंट आपके पास है या नहीं. अगर आपके पास है तो वेरी गुड, आप विड्रॉल कर लो. अगर नहीं है तो मुझे आपको भेजना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है. राइट. अगर आप फोन पे करने के टाइम या एटीएम में जाके इफ यू वांट टू विड्रॉ सम अमाउंट विच इज नॉट देयर इन योर अकाउंट, तो वो दिखाते हैं ना ऊपर इनसफिशिएंट बैलेंस. राइट. तो यहाँ पे भी सेम होगा. इफ यू मेंशन एंटर योर अमाउंट, ठीक है, इफ यू मेंशन कि मुझे 6000 उठाना है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल चेक कि आपका बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द अमाउंट यू हैव मेंशनड और नॉट. तो मेरा अमाउंट मैंने मेंशन की है 6000 और आपके पास है 5000. तो 5000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6000. नो राइट. 5000 इज लेस. तो ये क्या होगा, ये एल्स पार्ट में आ जाएगा, नहीं ये दिखाएगा कि आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है. अगर ये ट्रू हो गया, मतलब आपका जो बैलेंस है वो ज्यादा है आपके विड्रॉल अमाउंट से, तो क्या होगा, ये आपका बैलेंस से माइनस हो जाएगा उतना अमाउंट, एंड ये आपको दिखा देगा कि आपका अकाउंट नंबर ये है एंड यू हैव विड्रॉल दिस मच अमाउंट. एंड अगर आप चाहो तो वो आप करंट बैलेंस भी दिखा सकते हो, सेल्फ डॉट बैलेंस दिखा के आप वो भी दिखा सकते हो. एंड इफ यू वांट टू चेक योर बैलेंस स्टेटस, वो भी आप ये अकाउंट समरी को कॉल करके चेक कर सकते हो कि आपका नाम क्या है, का नंबर क्या है, कितना अमाउंट अवेलेबल है, ये सब आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंट समरी. एनी क्वेश्चन एनीवन? ये आप अच्छे से ठंडे दिमाग से देखना. राहुल प्लीज शेयर आपका कोड शेयर कर दो. मैम शेयर किया, आया नहीं अभी तक. चैट में तो शो है. फिर से करो एक बार. डन. हो रहा है मैम शो. मेरा वो इधर देख लेना.
हेलो मैम। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया ना? राहुल थोड़ा भेजो, अभी तक नहीं आया। मैम वो डॉग टेक्स नो आर्गुमेंट, इसके क्या होगा मैम ये एरर? भेजा भी है। अभी भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो। मैम स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है और मैं कोड भेज रहा हूँ, तो मैम आई थिंक सो आपके पास इधर तो दिख रहा जा रहा है बट उधर शो नहीं हो रहा है मैम। अब डॉक मत भेजो, ऐसे कॉपी करके पेस्ट करो। यस यस मैम, मैंने जो कोड है ना उसको सबको कॉपी किया, देन मैं चैट में जाके पेस्ट किया बट शो नहीं हो रहा है मैम। इधर से तो मैंने भेज दिया बट आपकी तरह शो नहीं हो रहा आप है। वो सॉरी किसके लिए? सॉरी, किरण किरण सर को जा रहा है, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी वही मैम, मैं बोल रही हूँ, सॉरी वो एक बार सॉरी चेक मैम। करो किसके पास जा रहा है। मैम मेरा आ गया होगा वो देखो। हाँ आ गया, डबल राहुल का आ डबल गया। अंडरस्कोर नहीं है। देखो मैम मैंने भेज दिया। हाँ हाँ आ गया। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। कॉपिंग योर कोड। हम्म, लास्ट डॉक ठीक है। ओके, आपका भी इनिट में प्रॉब्लम है, 2 अंडरस्कोर डालना पड़ता है। नेम एज कलर, यहाँ पे स्मॉल सी और यहाँ पे कैपिटल सी। यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल सी डाला था आपने। टॉक प्रिंट डेफ प्रिंट ऑल एट्रीब्यूट्स। ओके, self dot name, self dot age, self dot color, creating object dog1 dog attribute. यस मैम अभी शो है। किसी और का प्रॉब्लम है? प्रशांत, क्या प्रॉब्लम है? मैम आपको भेजा है। आगे पीछे का कुछ भेजो। ओके मैम। कोड है तो कोड भेज दो। मैम अगर डॉग के बाद अगर ब्रैकेट में मैं कुछ डालूँ ना ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ू तो वो ओके हो रहा है। ब्रैकेट में अगर वो कुछ आप डालूँ नहीं तो छोड़ सकते ना, आपने तो init मेथड डाला है तो आपको एट्रीब्यूट मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मिरर में तो वही बता रहा है ना कि वो ब्लैंक चाहिए। आपने कुछ गलती किया होगा, लेट्स सा। ओके, क्लास डॉग। ओके, तुम्हारा init कहाँ गया? हम्म, कौन सा? प्रशांत, वेयर इज योर init? यहाँ पे तो आपने टॉप की init लिखो यहाँ पे। मैं ये अब तक मैंने क्या सिखाया init के बारे में? मेरे पास स्क्रीन पे आपका शो करिए ना तो मैं वो देख के। Underscore underscore init underscore underscore. Only then you can write something within your parentheses while creating the object. Okay? ओके यहाँ पे आपने एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर लिया ना, तो इसलिए यहाँ पे जब आप डाल रहे हो ये सोच रहा है कि आपने तो इनिट किया ही नहीं, तो ये क्या आपने डाला है ब्रैकेट के अंदर। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। एरर आ रहा है क्या? यस मैम।
डेफ के बाद स्पेस डालो। हाँ डाला? डेस्क के बाद स्पेस है मैम, हाँ, स्पेस डालो। यहाँ डाल दिया। डाल दिया। तो अभी ये जो डेफ आपने लिखा है ना, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ आपका इमेज दिख रहा है? जी हाँ। हाँ, तो यहाँ पे आपने जो डेफ है ना आपका, इसके बाद स्पेस डालो। ओके फिर देखना कि डेफ ब्लू हो जाएगा। यस मैम ब्लू ओके। होने के बाद भी ये जी डेफ एंड ये डेफ हाँ सेम तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले आपने स्पेस नहीं दिया है, इंडेंटेशन नहीं दिया है। तो जी। ये जो आपने लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लास क्रिएट की है? नो मैम, मैंने न्यू टैब खोल के न्यू ओपन किया है। हाँ, तो ये तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि क्लास के अंदर ये सारे डेफ, ये सारे फंक्शन एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके तो फर्स्ट आपको क्लास क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर ये सारे होगा। तो सारे डेफ के आगे ये देखो, ये क्लास हमने क्रिएट की है, यस मैम उसके अंदर सारे, ये सारे इसके अंदर है। ओके ओके मैम ठीक है। मतलब न्यू टैब ओपन करना होगा तो सब क्लासिफिकेशन पहले करना होगा। हाँ, क्लास के अंदर आप ये क्रिएट कर रहे हो। विदाउट क्लास दीज थिंग्स आर नथिंग। ओके मैम। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? ओके, तो मुझे पहले कल का जो था ये शेयर करना पड़ेगा। ओके, और एक ये मैं शेयर कर रही हूँ, बट इसमें बहुत सारी चीज है जो हमने अभी तक सीखा नहीं है। इज इनहेरिटेंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये हम सीख लेंगे। रिसीव्ड? Yes, ma'am. ओके, चलो, थैंक यू, बाय, Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट।